Hi, I'm Dr. Surendra Kumar, Professor, BBD University School of Management. Today we are discussing about certain theories of leadership. Theory of leadership. Till date, we have discussed about certain things regarding the leadership. Leader is that person who has certain followers in certain specific situations or conditions. Now, there are certain theories who propounded that the leader is born or it's made up, or otherwise these are the various characters which lead maybe the leaders. Today we are discussing about the Blake and Montaigne's theory. Blake and Montaigne's theory. Blake and Montaigne's theory. Someone told us is Blackie, someone told about the Blake and Montaigne's theory. These are basically the theory related to the managerial grid. Grid is basically a junction, a solution in which we have developed certain characteristics. Now, generally in the leadership theories, there are two things. That is, leader are either workaholic or the work oriented or the people oriented. So, particular in this theory, we have put a chart. So, we will develop a chart by which we can just draw the things. Because the treatment of task orientation and people orientation as two independent dimensions. We already present task and people. These are basically the two independent dimensions, was a major steps in leadership studies. Many of the leadership studies concluded in 1950s at the University of Michigan and the Ohio State University focused on these two dimensions. Building on the work of the researcher at these universities, that is Michigan and Ohio State Universities, Robert Blakey and John Montaigne, 1960. Blakey and Montaigne, 1960, proposed a graphical portrait of leadership style through a managerial grid, sometimes called leadership grid. Managerial grid or leadership grid. The grid depicted two dimensions of leader behavior: concern for people, that is accommodating peoples, or concern with production. So we will just develop a small chart is to be there like a grid in which you can see what the thing is to be there. If you have to put down one grid like that, the people may be concerned for people, concerned for people, and concerned for work, concerned for production, concerned for production. Concern for production. So if you have to given the certain line scale like 1 to 9, like it is a low, like 0, you can say. So this is the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and this is 9. This is 0 star, the low. The manager is low production oriented and low concern of that. And here I will put down 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and this is the 9. This is low, this is high. This is low, this is high. So as per this theory, generally we are discussing, we have to give the certain points is to be there because this is the 0. Like, so if we have to put down x and y axis and we have to put down a certain grid, there we have to come down certain expectations is to be there. So in this manager grid, sometimes called, that is known as a leadership grid, the grid depicted two dimensions of leaders, concern for people and concern for production. So with each dimensions ranging from 0 to 1, we have to set down certain things in which you have seen the certain thing.
If you have to put down, what type of person is to be there? This is a complete bit. If you have to put down like that, this, like that, and we have just sit down things ki will just carry on every what the leader thinks, and we have to like that. So what type of characters the leader has? Leader is maybe people oriented, or that is the work oriented. Or which leader is good for the organization? So if we have to sit out this type of like that, so then we have to see at this stage, this is the stage where you can say down, this is 1, this is 1, 1, 1, 1, 1. That is what is this? This is a scale of 9, 1. This is 9, 1. What else is to be there? Which leader is good? This is 9, 9. Like that. That is 1, 9. This is the x and y axis. This is 1, 9. Which leader is good? Which? So if you have to look after 1, 2, 3, 4, 5. This is the 5. This is 5, 5. So then we can say down, there are certain things. So now in this collecting leadership style, we can see there are 5 resulting leadership styles come from 5 styles of leadership can be seen on this Blackie and Mountain's managerial grid model. What is that? There is one. First is 1, 1, 1, 1. Generally, this managerial grid is telling as impoverished management. Impoverished management is to be there. So this type of empower, this type of leadership, managers with this approach are low on both the dimensions and exercise minimum efforts to get the work done from subordinates. जनरली अगर आप देखेंगे तो जिस टाइप का जो लीडरशिप होती है बहुत कुछ फैमिली बिजनेस से इस टाइप के अप्रोच में कई जगह पाया जाता है, जहां पर पेरेंट्स अपने या ओनर्स अपने बच्चे को बिठा देता है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो नाउ ही इज नॉट इन द पोजीशन टू गेट डाउन हिज ओन डिसीजंस, द लीडरशिप स्टाइल्स को भी वो क्लियर नहीं कर पाता, इवन सबऑर्डिनेट सर्विसेज को भी क्लियर नहीं कर पाता. लेटर ऑन, दैट इज द मेन थिंग इन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इवन द फैमिली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव टू पुट सर्टेन टाइम कि अपने सब लिंक्स को कहते हैं कि नाउ यू हैव टू गो इन द इंडस्ट्री, टेक सम एक्सपीरियंसेस, देन ज्वाइन एज ए मैनेजर और सीनियर मैनेजर पोजीशन was there. So impoverished management, manager with the approach are low on both the dimensions, that is with the leader has low concern for people satisfaction and work deadline. वर्क डेडलाइन से कोई मतलब नहीं, पीपल डायमेंशन से भी इनका कोई मतलब नहीं होता, और जब दोनों चीजों से मतलब नहीं होता तो फिर इंस्टीट्यूशन में आप हैं किस लिए? So the leaders are termed effectively where their action is merely aimed at preserving job and seniority. कई बार आप ये लीडरशिप जो दिखेगा ये आपको जब रिटायरमेंट के करीब आदमी पहुंचता है तब आपको दिखेगा इन गवर्नमेंट सेक्टर्स. प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यू नो, बट व्हेनेवर द गवर्नमेंट सेक्टर इज टू बी देयर, वो कहता है ठीक है बस कुर्सी पे बैठा हूं बट आई विल नॉट टेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन इन द लास्ट 6 मंथ, भाई मेरी ठीक से रिटायरमेंट निकल जाए, आई विल गेट डाउन द पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मुझे मिल जाए. कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कुछ किया और मेरे खिलाफ कोई एक्शन हो गया तो मेरे जो स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स हैं वो भी मुझे ना मिले. तो पहला तो फर्स्ट हो गया हमारा इम्पावरिश्ड मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप. सेकंड इज टास्क मैनेजमेंट. देखिए सेकंड इज 9-1. दिस इज द वे we are concerned with the production on the high end, production high, and concern for people very low. That is autocratic type of leadership, like ऐसे कि मुझे सिर्फ काम से मतलब है बाकी से मतलब नहीं है.
So this is also called a dictatorship or Paris style of dictatorship. Here, leaders are more concerned about production and have less concern for peoples. The style is based on the theories of McGregor's X theory. The employees' needs are not taken care of and they are simply a means to an end. The leader believes that efficiency can result only through proper organization of work systems and through estimation of the people whereas possible. Such a style can definitely increase the output of organization in short run, but due to the strict policy and procedures, high labor turnover is inevitable. So इस conditions में ऐसा ही होगा. Third, we will discuss about this. First, we will the middle में बात नहीं करते अभी. We will just consider the what is the 1-9. This is someone told this is the country club. Country club. आराम की जिंदगी. Whatever. Because we are concerned with the people. High. But काम ना हो तो ये चलती है जनरली इनफॉर्मल ग्रुप्स वगैरह में जब हम बात करते हैं. दिस इज बेसिकली द कॉलेजियल स्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय लो टास्क एंड हाई पीपल कोऑर्डिनेशन वेयर द लीडर गिव्स थॉरो अटेंशन टू द नीड्स ऑफ द पीपल. हम सिर्फ एम्प्लॉयज के बारे में सोचते हैं, हमें वर्क से कोई मतलब नहीं होता. ये फ्रेंडशिप सर्किल इन सब में चल जाएगा. और स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर सकते हैं, या ऐसा लीडर जिसकी पावर्स नहीं हो वहां ये चल जाएगा, या वो सत्ता में नहीं हो वहां ये चल जाएगा. बट नॉर्मली इन द इंस्टीट्यूशन बेसिस, इन द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बेसिस, दिस थिंग विल नेवर पुट डाउन द थिंग्स. So the leader feels that such a treatment with employees will lead to self-motivation and will find people working hard on their own. However, a low focus on tasks can hamper production and lead to questionable conditions is to be there. So this condition ऐसा है जहां पर जैसे whatever the institution is to be there, जहां self-motivated people ज्यादा होते हैं वहां ये लीडरशिप को चल जाएगा country club style, but not at everywhere because we know the things is to be there कि हमारे पर्टिकुलर इन द मैनेजर फील्ड में कई थ्योरीज ऐसी कही जाती हैं कि जब तक आदमी को काम नहीं दिया जाए वो काम नहीं करता. सेम थिंग. तो ये कंट्री क्लब इस टाइप ऑफ लीडरशिप में भी कम डाउन. फिर हमारा थिंग्स इज 9-9. दिस इज द बेस्ट पोजीशन. वी कैन से दिस इज अ वेरी नाइस पोजीशन टू बी देयर वेयर वी हैव टू पुट डाउन द कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हाई एंड कंसर्न फॉर पीपल हाई. अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छे एम्प्लॉयज का हम डेवलपमेंट कराएंगे. दिस इज द नोन एज द टीम मैनेजमेंट. Team management. Best result, best result. Indian cricket team, whatever, if they win the World Cup, win the match, if they win, definitely a lot of facilities, is to be provided. Or day by day, they have to put down things to be there. So, characterized by high people and task focus, the style is based on the theory of Y theory of McGregor, and has been termed as the most effective style according to Blake and Mountain. The leader feels that empowerment, commitment, trust, and respect are the key elements in the creating a team atmosphere will automatically result in high employee satisfaction and production. So now another things. Now this is the 5 and 5, 5.5. 5.5 is basically the middle of the road. It is known as a middle of the road. बीच का रास्ता. Where the manager is concerned for people also, where the manager is concerned for the production also. So in this, it is basically a compromising style where the leader tries to maintain a balance between the goals of company and the needs of people. The leader does not push the boundaries of achievements, resulting in average performance for organization. Here, neither employer nor production needs fully met. चलता रहता है सर. So whatever the advantages, इसका advantage क्या रहा? Why we are thinking कि manager style ऐसा है? These are one time is to be there. We have to this 5 types of leadership is to be there. So manager grid or manager leadership grid is used to help managers to analyze their own leadership styles through a technically known as grid training. This is done by administrating a questionnaire that helps manager identify how they stand with respect to their concern for production and people. The training is aimed at basically helping leaders reach to the styles. तो अगर इस लीडरशिप का यही है कि we have to fill a paper certain times और नो कि भाई लीडरशिप में उसका बिहेवियर कैसा है, इसमें जिस भी जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट हमें मैनेजमेंट को क्या चाहिए, ये a successful leader, a successful company, a successful orientation leaders to be there, whatever. This is the prime consideration was there.
So how we have to do down? So we have to just check down what type of behavior they have, whatever they have, how they will lead the team, और उन्हें जो भी capabilities है उसको हमें धीमे 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 push up करते हुए ले जाना है. This is basically the Blackian Mountains theory. So Blackian Mountains theory is to be there. They have to show down कि now these are the various styles in which the leaders to be cleared out, और वो अपना काम ऐसे ही करते आते हैं. So overall this is the consensus which we have to lead on. Now we have to start with the second theory. The second theory is Hassler-Blanchard. Hassler and Blanchard. This is basically known as a situational theory. Situational theory. We have already discussed in my sum of lectures situational theory in a different mood also. Depend on the Indian condition, depend on the foreign conditions. We have already discussed these things together. So Hassler and Blanchard, they have developed this type of theories in which they have to show down how we have to carry on. So as per the name, right in the name of the leadership theory, you can get a great indication of what is all about. The term situation indicates that leaders should vary their approach based on the people they are leading and the circumstances that sit on the terms of the hand. The Hassler-Blanchard situational theory is one that is based around variable leadership depending on a variety of circumstances, when a leader is able to adapt to the situation as quickly as possible within which benefit of the be sought was there. So in this specifically we have to put down the three things, that is circumstances, then second thing is maturity of the leader, and the third is knowledge or skills. इस स्टडी को बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाना हो तो एक बार एक स्कूल में एक बच्चे ने कुछ सामान एक स्टूडेंट का चुरा लिया और उसने अपने गुरुजी से बोला कि सर, बच्चे ने जाके कि मेरा ये सामान किसी ने चुरा लिया सर, आप मुझे वो सामान देख लीजिए. तो गुरुजी ने सब बच्चों को बोला, टीचर ने कि भाई तुम लोग सब दीवार के सहारे अपना सिर करके खड़े हो जाओ और मैं देखता हूं अगर किसी बच्चे ने लिया है तो मैं बताऊंगा. ठीक है, सब बच्चे खड़े हो गए और गुरुजी ने सब बच्चों की जेब में सामान में पहले देखना शुरू किया और सब बच्चों से कह दिया आंखें बंद रखना. थोड़ी बार देखने के बाद उन्होंने जिस बच्चे ने चुराया था उसके पास से सामान निकाल करके अपने पास रखा और बाद में उस बच्चे को लौटा दिया. सिचुएशन because we have to get the maturity of the leadership. Now after so many years to be there, around 20 years to be later, जिस लड़के ने वो काम किया था वो काफी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बना और उसकी इच्छा हुई कि अपने गुरु जी से मिले, बिकॉज उन्होंने मेरी इज्जत उस समय रख ली थी. और वो खोजता हुआ अपने गुरु के पास पहुंचा, उसने बताया और खोजता हुआ बताया कि सर आपने मुझे पहचाना. गुरु ने कहा नहीं बेटा, मैंने तुमको नहीं पहचाना. तो उसने कहा सर मैं वही हूं जिसने वो सामान चुराया था उस दिन बच्चे के उसमें. तो सर आपने सबके सामने मेरा बताया नहीं, जिससे मेरा मॉरल बहुत ऊंचा रहा और मैं अच्छा करता गया और आज मैं एक अच्छे पोजीशन पे हूं. तो गुरु जी ने कहा बेटा सच्चाई यही है कि मुझे भी नहीं पता कि तुम वो थे, क्योंकि उस समय मैंने भी अपनी आंखें बंद की हुई थी. नाउ दिस इज द मैच्योरिटी ऑफ द लीडर वाज देयर, कि हाउ दे हैव टू डील विद. So in that condition, in the situation leader, we have to put down, because already discussed, there are 5 types of leadership style. That is the participating, selling, delegating, and the telling style. How we have to deal with these are 4 types, because Hassler-Blanchard is telling this type of 5 participating style of leadership is to be there. There is participating style, selling style, participating, selling, then delegating, and then telling style. How we have to deal with the people? We should tell them, we should sell them, we should participate with them, and this one. So these are the 4 leadership styles to be propounded by the Hassler-Blanchard. So these are totally depend on 1, 2, 3, 4, like M1, M2, M3, M4. How mature you are? आपको किस लेवल पे काम करना है. अगर हम बेसिक लेवल पर हैं तो हम क्या करेंगे? We have to only put down, if I am the leader,
लाइक बहुत जूनियर लेवल का मैं लीडर हूं तो मैं करूंगा, मैं कहूंगा भैया वी हैव टू कम डाउन विद द पार्टिसिपेटिंग अप्रोच, आइए हम लोग साथ में काम करते हैं। दूसरा, अगर मैं थोड़ा सा उससे हाई लेवल में हूं, मेरी मैच्योरिटी अच्छी है, तो मैं अपनी अथॉरिटी, मैं सेलिंग स्टाइल में आऊंगा, मैं कहूंगा भैया तुम जाके काम करो, मैं कंट्रोल करूंगा। अगर मुझे लगता है नहीं ही कैन मैनेज द थिंग्स, हमारी टीम मैनेज कर सकती है, वी विल डेलीगेट द अथॉरिटीज टू बी देयर, नाउ दे विल मैनेज ओवरऑल सारे पर्सन। और अगर ऐसा लगता है नहीं ओनली फॉलोअर्स बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, what the thing is to be, because our knowledge was there, we have each and everything is to be there, immediately we have to telling style, मैं उन्हें बताऊंगा, करूंगा खुद ही। इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत बार यही होता है, लेकिन सिंपल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में वहां पे डेलीगेटिंग थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि मैनेजर जो होता है उसको अपनी पोजीशन बचानी होती है, तो सबसे राय ले लेगा, सबसे डिस्कस कर लेगा, और देन ही इज टेलिंग द दिस टाइम। सो दिस टाइप ऑफ लीडरशिप इज टेलिंग ब्लैंचर्ड स्टाइल, और इसके हिसाब से वो थ्योरीज की प्रोपाउंडेड करते हैं। और ब्लैंचर्ड स्टाइल ऑफ लीडरशिप में वी हैव टू डील विद तो एवरी टाइम इट्स नॉट नेसेसरी कि यही स्टेप, धीमे धीमे हमें इस स्टेप की तरफ बढ़ना पड़ता है अगर हम लोग बात करें डे बाय डे, और इस टाइप से वी हैव टू कैरी ऑन व्हाटएवर सो इज टू बी देयर। सो अगर हम लोग जनरल बात करते हैं, वी हैव टू व्हाटएवर द थिंग्स, देयर आर टू स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप वी हैव डिस्कस्ड, लाइक ब्लैक की थ्योरी एंड द हार्सलर ब्लैंचर्ड थ्योरी। Black theory is to be there. There are 5 fundamental principles to be there. Like the leadership style में 5 होते हैं हमारे पास. And then Halsey and Blanchard they have to rule. There are 4 principles is to be there in the leadership style, in which day by day करना आपको सारी styles हैं. ये नहीं है कि आज हमने ये कर दिया तो हम छोड़ देंगे, हम ऐसे ही लीडर बन जाएंगे, नहीं. According to situation, according to maturity, according to circumstances, you have to deal with all the 4 things. So now we have to just conclude the things. These are the basic things. We just to carry on.